बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन log normal distribution. Please consider if our random variable x is not normal. A random variable is not normal. We came to know one way or the other it is not normal. Either with the help of graphs or with the help of some software, we came to know that x is not normal. Okay, x was not normal, and we took natural log of x. So we applied log transformation, natural log transformation. So after taking natural log of the data, we saw that it became normal. It became normal. See, after taking the natural log, ln x is normal. Please remember, x was not normal, but natural log of x became normal. So a random variable x, which was not normal and whose natural log was normal, is called log normal. So if natural log of some variable is normal, is normally distributed with the mean mu and variance sigma square, then we say that this random variable x follow log normal distribution, and symbolically we write it like this, that x follows log normal distribution. See this, we write it like this. Okay, we repeat it. If x is not normal and if natural log of x is normal, then x, which was not normal, is actually log normal, right? This is definition of log normal distribution. Thank you. Now we have a look on the probability density function of log normal distribution. So probability density function of log normal distribution is given like this, and we derive this with the help of transformation technique, which we'll study in the next semester actually. So we simply learn that probability density function of log normal is this: f of x equals to 1 over x sigma into 2 pi under root e raised to power minus 1 by 2 into whole square of ln x minus mu over sigma. And support of log normal distribution, unlike normal, this is defined on the positive axis. This is something to remember, that support of log normal distribution is not a real line. Rather, it is defined on the positive x-axis only. So its support is 0 to infinity, right? Because ln x is involved here, and we cannot take log of natural value. This may be one of the reasons, and this is due to the transformation we apply for the derivation of log normal distribution. Anyway, parameter space is this: sigma is positive, and mu is a real number. So this is PDF of the log normal distribution. Let's have a look on the graph of log normal distribution. So generally log normal distribution is positively skewed, but as standard deviation decreases, it tends to become symmetric. You see, red, green, blue. The lowest sigma of standard deviation is 0.25, and for this lowest value of among these three values of standard deviation, for the lowest standard deviation value of standard deviation, the graph of log normal distribution tends to be symmetric. So we can say that log normal distribution approaches normal for lower values of the standard deviation.
Now we can come to total probability of log normal distribution. So like other distributions, total area under the normal curve is unity. And for this, we'll have to show that on this support, which is 0 to infinity, integral of this PDF equals to 1. So let us start. This is left hand side. We placed a value of this PDF here. Okay, integral sign is there, the x is there. 1/2 पाई को हमने कांस्टेंट होने की वजह से एज अ कन्वेंशन आउटसाइड द इंटीग्रल लिखा फॉर द सेक ऑफ brevity only, and we went for this transformation. सो ई की पावर में स्क्वायर के अंदर जो टर्म है, स्क्वायर के अंदर जो चीज़ें थी, उनको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया वाई का, और जब इसको वाई का नाम दिया तो इसको हमने एक्स के लिए फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये सिग्मा वाई बन गया, और ये न्यू जाके इधर ऐड हुआ तो ये सिग्मा वाई प्लस न्यू एल एन एक्स आ गया। अब बोथ साइड्स को आप ई की पावर में जब आप लिखेंगे ई की पावर में, तो ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये ई की पावर में रह जाएंगी चीज़ें, तो ई रेज़ टू पावर न्यू प्लस सिग्मा वाई आपके पास आ गया। राइट, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये लिखें, इनको आप लिखेंगे ई की पावर में, तो ई और एल एन जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल करके एक्स बार किया जाएगा, ये लिखें, और इसको भी ई की पावर में लिखा तो ई की पावर ये चीज़ हमारे पास आ गई। डेरिवेटिव लिया तो ई रेज़ टू पावर समथिंग का डेरिवेटिव यही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो डेरिवेटिव ऑफ द पावर विद ये आप देखें y का क्वेश्चन सिग्मा है, तो y का डेरिवेटिव 1 है, तो सिग्मा ये सारा डेरिवेटिव आ गया। तो दिस इज डी एक्स, यहाँ प्लेस करने के लिए ये वाला डी एक्स हम यूज़ करेंगे। सो आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, इस सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि आज के बाद या इस स्टेप के बाद हमें x नज़र नहीं आना चाहिए, y ही नज़र आना चाहिए इन दिस एक्सप्रेशन। तो और न्यू लिमिट्स भी हमने चेक कर ली। तो आप देखें जब आप यहाँ ज़ीरो प्लेस करेंगे ना, ये वाला एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो एल एन ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो एक्स ज़ीरो के लिए जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब आप यहाँ एक्स की जगह ये वाली ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एल एन इन्फिनिटी होता है। तो जब एक्स इन्फिनिटी है तो वाई भी आपका इन्फिनिटी होगा, तो नई लिमिट आ गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। The limits change हुई हैं यहाँ पे because of this transformation. Whenever we substitute something, do change the limit space. चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहाँ चेंज हो गई। सो ये हमने यहाँ प्लेस किया 1/2 पर, अंडर रूट वैसे ही आ गया 1 ओवर सिग्मा, और एक्स की ये वैल्यू देखिए हमने निकाली थी, ये यहाँ इस एक्स की हमने यहाँ प्लेस की रेस पर न्यू प्लस सिग्मा वाई ई रेस पर -1/2, इस अंदर वाली पूरी वैल्यू को हमने क्योंकि वाई कह दिया था तो यहाँ वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हमने डी एक्स की वैल्यू देनी थी, जब हमारे पास ये वैल्यू तैयार पड़ी हुई है, ये एज इट इज़ हमने उठाई और यहाँ रख दी, ओके। अब ई रेस पर न्यू प्लस सिग्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों आपस में कट गए, सिग्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी सिग्मा आपस में कट गए, एंड वी हैव लेफ्ट विद दिस। और अगर आप देखें तो दिस इज पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ भी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग in doing more algebraic manipulation, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, हम लिमिट को 0 to इन्फिनिटी करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप ई की पावर में माइनस के अलावा जो चीज़ है उसको एक नया वेरिएबल लाइक टी आप अगर कह लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2t आ जाएगा, और डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, टी का स्क्वायर रूट का मतलब होता है टी की पावर 1/2 को हमने नीचे बुलाया, नीचे आया, और टी की पावर 1/2 थी उसमें से -1 किया, तो ये डेरिवेटिव आपके पास का सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से तैयार हो गया, दिस इज डी वाई। ओके, यहाँ डी वाई की जगह हम ये सारी चीज़ प्लेस करेंगे, और आपको पता है इस सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि आप अब इस स्टेप के बाद से आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर वाई नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ टी नज़र आएगा। तो जब हम इसमें हमने 1/2 वाई स्क्वायर की जगह टी प्लेस किया तो ये देखेंगे तो इसका -t बन गया, राइट। और बाकी जो वैल्यू थी हमारे पास डी वाई की वो हमने ये प्लेस की। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,